अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11th के लिए फिजिक्स का गेस पेपर। अब चूंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो इस कम वक्त में आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप इन्हीं सवालातों पर फोकस करें। तो हम इसको सेट करते हैं। तो आपने क्या करना है फिजिक्स में, आपने ये चंद क्वेश्चंस हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, तो आप ये पढ़ें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरीके से आप हमारा शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपने पढ़ना है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फार्मूला, स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ dimensions. तीसरा क्वेश्चन, using dimensional analysis convert 1n force into dynas. Question number 4, define significant figures and its rules. मतलब रूल्स को आपने स्टेट करना है, यू हैव टू स्टेट दीज रूल्स। क्वेश्चन नंबर 5, check dimensional correctness of v equal to u plus at. Question, define accuracy, precision and least count. Question, by calculus method derive equations of motion. Question, define dot product of two vectors and write down its properties. Question, projectile motion आपने बताना है क्या है, एंड ट्रेजेक्टरी ये डिफाइन करना है। डिराइव इक्वेशंस फॉर, फिर आपने इक्वेशंस किसकी डिराइव करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन, ड्रॉ ए रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि मेन जो महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट अहम सवालात वो वीडियो के आखिर में भी हो सकते हैं। So don't skip the video, watch the video till end. Question, draw a relationship between maximum range and maximum height. State parallelogram law of vector addition with respect to resultant of two vectors, derive equations. Define friction, state it as a necessary evil, causes, directions and the factors on which friction depends. What are the laws of limiting friction? Differentiate between angle of friction and repose. What is centripetal force? Derive an equation for it, for this particular force. What is banking of road? Why is it necessary? Derive an equation for it. Define angular displacement, angular momentum, velocity,
acceleration with units and dimensions. Don't get confused here. Acceleration with units and dimensions. What is inertia and its types? What is force, of course? And what are the types of forces? Newton's second and third laws of motion with applications. यानी न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन विद एप्लीकेशंस, मतलब हम ये लॉज कहाँ पर अप्लाई करते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. State and explain rocket propulsion, gun recoiling. Question: distinguish between transverse waves and longitudinal waves. Explain progressive wave. Draw equations for its displacement and velocity. What is organ pipe? What are different modes in open and close organ pipe? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज स्टेशनरी वेव, हाउ इज इट फॉर्म्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग fixed at both the ends of the different modes of vibration. Distinguish between beats and beat frequency. Explain periodic motion and oscillatory motion with examples. Define SHM. Derive expression of displacement velocity of a particle executing SHM. What is Force law of SHM? What is simple pendulum? Derive an equation for its time period. Also, show motion of simple pendulum is SHM. Using dimensional analysis, derive an expression for the time period T of a simple pendulum. State different gas laws. State and explain postulates of kinetic theory of gases. Between kinetic energy and temperature, deduce relationship. या ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, deduce relationship between kinetic energy and temperature. What is the relationship between kinetic energy and pressure? Define with equations. यानी आपने ये डिफाइन भी करने हैं और उनकी इक्वेशन भी लिखनी है. क्या? वेलोसिटी आपने ये डिफाइन करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है, एंड एवरेज वेलोसिटी, इसी तरह एवरेज वेलोसिटी की आपने इक्वेशन भी लिखनी है और इसकी डिफिनीशन भी देनी है. डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ. आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करनी है और आपने कैलकुलेट भी करनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम. किस चीज़ की? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. What are intensive and extensive processes? Question: state law of thermodynamics and its mathematical form.
Question: in the light of Kelvin, Planck and Celsius statement या Celsius, state second law of thermodynamics. What is Carnot engine and state Carnot theorem? What is viscosity and effect of temperature, or effect on temperature? You can figure it out. Okay, next question. What is relationship between surface energy and surface tension? State Pascal's law and its applications. Question: हाँ, यहाँ पर मैं बताऊं कि MCQs लास्ट में है. MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो लास्ट में आएंगे. Question: laminar turbulent fluid flow. What is laminar and turbulent fluid flow? State Bernoulli principle, its equation and applications. Question: conduction and convection in calorimetry. Question: what is coefficient of linear expansion and area expansion? What is coefficient of linear expansion and area expansion? What is inertial and gravitational masses? What is universal law of gravitation and acceleration due to gravity? What are the variations of acceleration due to gravity with depth and altitude? Definition of orbital and escape velocity with equations respectively. दोनों की यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी को आपने डिफाइन भी करना है और इनकी इक्वेशंस भी लिखने हैं. एक्सप्लेन या होगा स्टेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. रेडियस ऑफ गैरिटन. तो इस तरह आखिरी क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स. बस ये आपने करने हैं. तो MCQs आपने पढ़ने हैं पावर, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, वेलोसिटी, विस्कोसिटी. यानी आपने टॉपिक्स लेने हैं, इन पर ऑब्जेक्टिव बनाने हैं. इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं. एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, सॉरी, लेमिनार क्या है ये, बर्नौली प्रिंसिपल, हीट, Carnot engine, organ pipe, simple pendulum, stationary wave, beat frequency, force impulse, average speed, dimensional formula, dimensions, differentiation and integration. तो आपने इस पर ये ऑब्जेक्टिव बनाने हैं. सो एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक. मेरी दुआ है आपके लिए. तो आप इन सवालात को अच्छे से पढ़ना. बस इसके बाहर कुछ नहीं होगा एग्ज़ाम में. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.